Padua, the miracle worker, pray for us. Saint Gonzalo Garcia and Saint Francis Xavier, patrons of our diocese, pray for us. Saint Thomas the Apostle, patron of our nation, pray for us. We pray in the name of Christ Jesus, our Lord. Amen. Praise the Lord, everyone. Uh, how are we doing? All good. Hope everyone's doing good. Can I see your thumbs up? Like, there's a reaction down on your screen. You can just put a thumbs up if you're all doing good. Praise the Lord. So before we get into the time of praise and worship, I just would like to share with you all something. So I was watching this newly released movie, Dil Bechara, and one of the tagline in it says that नारी हर बच्चे को ये कहानी सुनाती है. एक था राजा और एक थी रानी, दोनों मर गए और खत्म कहानी. And it's there in the trailer as well. You can watch it later on. So this line shows us how our earthly relationships, how our earthly love stories just are limited to the time of death. Death cannot stop. Death cannot extend our relationships, our love stories. It just gets over at death. But our love story with Jesus, our relationship with God is everlasting, and it is shown in the Bible, written in John 3:16, where it says, God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whoever believes in him may never perish but have eternal life. Praise the Lord. Can I see your thumbs up? Okay, praise the Lord. So, as we get into this time of praise and worship, let us just thank God for this amazing love that He bestowed on us. Let us thank Him for all He's done in our lives. And also let us nurture our relationship with God as we sign ourselves in the name of Father and Son and the Holy Spirit. Amen. Lord God Father, we thank and praise you for this day, for this time, Lord. Thank and praise you for being with us. Thank and praise you for guiding us. Thank and praise you for your amazing love in our lives, Lord. Thank you, Lord, for always being by our side, Lord. Thank you for nurturing. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name.
darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. We praise you, Lord. There is none like you. We praise. Oh Lord, we praise. Thank you, Lord. Thank you, Lord, glorify you. There is none like God. We praise you, Father. We love you, Father. Thank you, Lord. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for giving us this time. Lord, we thank you for having this time, this online prayer meeting. Lord God, Father, as we are going to go, Lord God, Father, ahead in this prayer meeting, Lord, we surrender ourselves, Lord God, Father. We surrender ourselves into your hands, Lord God. So, Lord, Heavenly Father, we thank you, Lord. Holy Spirit,
Come along with us, Holy Spirit. We invite you, Holy Spirit. Holy Spirit, we ask forgiveness for our sins. We repent for our sins. Thank you, Holy Spirit. Thank you for guiding us and leading us. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ उसने दिखाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए उसने दिखाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु यीशु ही मार्ग है यीशु ही सत्य है यीशु ही जीवन है यीशु मेरा प्रभु सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
at this moment, as we come in your presence, Lord, we surrender ourselves completely into your hands, Lord. Lord, at this moment, we ask you, Lord, to pour down your love upon us, Lord, because you are a Father, Lord. You are a Creator, Lord, and you love us with an everlasting love, Lord. Your love never ends, Lord. Your love has conquered death, Lord. And Lord, at this moment, we have experienced your love, Lord, in our lives, Lord. Lord, even at this moment, as we sit, as we come in your presence, Lord, come before your throne, Lord, we want to worship you, Lord. And it is our desire, Lord. Lord, we give our heart, mind, body, and soul completely into your hands, Lord. And Lord, we pray that you take complete charge of our lives, Lord. And Lord, we pray that you nurture our relationship with you, Lord. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. It is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm
way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Hello, check. Praise the Lord. Jaden, can you unmute Priya's mic? Hello, check. Yeah. मैं टॉप ट्रांसलेट करूँ माइक You off है ना? Hello, check. Savina, we can't hear you. Hello, check. Hello. Check sound. Can you hear me? Yeah. Jaden, am I audible? You're audible, Yes. Savina. Okay. Sorry for the inconvenience caused. So praise the Lord. Good evening and welcome to this online prayer service. Praise the Lord. और आपका स्वागत है इस ऑनलाइन प्रेयर सर्विस में. And today we're going to talk about the power of persistent prayer. तो आज हम लगातार प्रार्थना करने में जो ताकत होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं. And there are various things that are mentioned about this in the Bible. तो बाइबल में इस बारे में कई चीजें लिखी गई हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so let me ask you a question. How many of you all are struggling for answers to your prayer? तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने प्रार्थना की उत्तर पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? Okay, so probably some of us are struggling from years, probably some of you are struggling from weeks and months or probably days. तो हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से कोशिश कर रहे हैं. And God is not answering our prayer. This is our thought, and probably we started thinking that way, that God is just not, able to move in my situation. तो हमें ऐसे सोच आते हैं कि प्रभु हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहा है और हमारे परिस्थिति में कोई कार्य नहीं कर रहा है. And this is our thought, and some of us give up praying.
और हम में से कुछ लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। फिर We think that the best way is to let me give up and let me not just pray. हमें लगता है कि प्रार्थना करना ही बंद कर देते हैं क्योंकि उत्तर तो नहीं मिल रहा। Praise the Lord. प्रेज द Does लॉर्ड। this happen with you? क्या हमारे साथ ऐसा होता है? Yeah. Okay. So today, let us look at the power of persistent prayer and people who prayed persistently from the Bible. तो आज हम देखेंगे कि लगातार प्रार्थना करने में ताकत है, और बाइबल में हम उन लोगों की जिंदगी को देखेंगे जिन्होंने लगातार प्रार्थना की है। And Jesus himself talks about two parables from the Bible. और यीशु मसीह स्वयं ऐसे दो पैराबल में बात करते हैं। Okay, so there are two parables that talk about persistent prayer, and God himself, Jesus himself talks about this. तो यीशु मसीह स्वयं इस बारे में बात करते हैं। Okay, so if you have your Bibles, you can look at Luke हम chapter 18 verses 1 to 8. हम लूकस का बुक 18 1 से लेकर 8 तक देखेंगे। Okay, this is the first parable where Jesus teaches us through the story of the persistent widow. तो ये वह भाग है बाइबल का जिसमें यीशु ने उस विधवा के बारे में जो बताया है, जो लगातार जाकर विनती करती थी महाराज के पास। Okay, so I'm going to read this in English and then Priya will read it for us in Hindi. You can also refer to the Bible, Luke 18, 1 to 8. I'm quickly going to just read through it. One day, Jesus told his disciples a story to show that they should always pray and never give up. There was a judge in a certain city, he said, who neither feared God nor cared about people. A widow of that city came to him repeatedly saying, "Give me justice in this dispute with my enemy." The judge ignored her for a while, but finally he said to himself, "I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. I'm going to see that she gets justice because she is wearing me out with her constant request." And then the Lord said, "Learn a lesson from this unjust judge. Even he rendered a just decision in the end. So don't you think God will surely give justice to his chosen people who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will grant them justice quickly. And when the Son of have faith." I'll read it in Hindi. नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यह समझाने के लिए ईसा ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो न ईश्वर से डरता था और न किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दाई के विरुद्ध मुझे न्याय दीजिए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं न तो ईश्वर से डरता हूँ न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की आवश्यकता जरूर करूंगा, जिससे वह बार बार आकर मेरे नाक में दम करना बंद कर दे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है? क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए न्याय की आवश्यकता नहीं करेगा, जो दिन रात उससे दुआ करते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह सिद्ध है, उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा, sorry, I think that's done. Yeah, verse 8, read it. Okay. परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा?
Praise the Lord. So this is the first parable which is about the persistent widow, and it talks about how this widow goes on constantly before this unjust judge, and the judge is tired of her persistence that अरे कितने बार आएगी, and he ultimately says, let me give her justice. तो ये इस विधवा की कहानी है जो बार बार लगातार निडर होकर राजा के पास जाती है और विनती करती है, और क्योंकि वह बार बार जाती है इसलिए राजा परेशान होकर उसे उसकी आवश्यकता को पूरी करता है. Praise the Lord. Praise the Lord. And the Savina, we second can't persistent, sorry, we can hear you now. Friend. We can hear you now. the second parable that we're going to read is about the parable of the persistent friend, which is from Luke 11 verses 5 to 8. लूकस 11 Read. लूकस 11:5 से लेकर 8 तक. Okay, so quickly I will read this. Then teaching them more about prayer, he used this story. Suppose you went to a friend's house at midnight, wanting to borrow 3 loaves of bread. You say to him, a friend of mine has just arrived for a visit and I have nothing for him to eat. And suppose he calls out from his bedroom, don't bother me. The door is locked for the night and my family and I are all in bed. I cannot help you. But I tell you this, though he won't do it for friendship's sake, if you keep knocking long enough, he will get up and give you whatever you need because of your shameless persistence. फिर ईसा ने उनसे कहा, मान लो कि तुम में कोई आधी रात को अपने किसी मित्र के पास जाकर कहे, दोस्त मुझे 3 रोटियां उधार दो, क्योंकि मेरी एक मित्र सफर करके मेरे यहाँ पहुंचा है और उसे खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है. और वह भीतर से उत्तर देगा, मुझे तंग न करो, अब द्वार भी बंद हो चुका है और मेरे बाल बच्चे और हम सब बिस्तर पर हैं. मैं उठकर तुमको नहीं दे सकूंगा. मैं तुमसे कहता हूँ, वह मित्रता के नाते भले ही उठकर उसे कुछ न दे सके, किंतु उसे आग्रह के कारण वह उठेगा और उसकी आवश्यकता को पूरी कर देगा. Praise the Lord. Praise the Lord. So now why are these parables given to us? तो ये सारी कहानियां हमें क्यों दी गई है? Hello? हेलो. These parables are not given to us to show that Jesus or God is compared to the judge, or God is compared to that wicked that friend. तो ये कहानियां हमें इसलिए नहीं दी गई है ये दिखाने के लिए कि ईश्वर जो है उस अधर्मी न्यायकर्ता के जैसा है या फिर उस दोस्त के जैसा है. This parable is for us to understand that how we can, people being evil can still grant your request, then how much more God will grant a request if we go to Him again and again. पर ये हमें यह समझाने के लिए है कि इंसान दुष्ट होकर भी अगर आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं तो ईश्वर जो कि अच्छा है वो हमारे लिए और कितना करेगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen. Okay, so let's quickly look at what are the learnings from this parable. तो हम इस कहानियों से क्या सीखते हैं? The first and foremost thing that we learn is that both the widow and the friend, they took the first step, and it is written about them that they constantly prayed and persistently went before the judge or the friend. तो दोनों ही विधवा और यह मित्र जो थे लगातार प्रार्थना करते रहे और वो लोग बिना रुके अपनी मांग करते रहे. The meaning of persistent is that someone who is asking, okay, despite of there is an opposition that keeps on coming. तो लगातार करने का यह अर्थ होता है कि भले ही सामने से आपको जवाब नहीं मिल रहा है या फिर मना किया जा रहा है बार बार, फिर भी आप पूछते रहो, मांगते रहो. Praise the Lord. Praise the Lord. So that is the first step, that the person you go on and you do not give up, but you constantly ask.
तो ये पहला कदम है कि आप लगातार मांगते रहो और आप हार ना मानो. And it is written in the parable of the friend that because of his shameless persistence, तो इस मित्र वाले कहानी में लिखा गया है कि वो बिन एकदम Sharam, बिल्कुल बिल्कुल बेशरम होकर मांगता रहा. right? So in front of people, if we can, ask like this, so definitely God is a father and we can ask him again and again, persistently. तो अगर हम लोगों के सामने इतने बेशरम होकर मांग सकते हैं तो हम ईश्वर से जरूर ही मांग सकते हैं लगातार. The second thing that we learn from this particular parable is that God is eager to answer. और दूसरी चीज जो हम सीखते हैं इस कहानी से कि ईश्वर स्वयं उत्सुक है हमारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए. Okay, so people who are so evil and mortal men can give bread, parishan hoke, and that judge can give justice to the lady. That how much more God is waiting to answer our prayers. तो जब ये मित्र परेशान होकर उसे रोटी देता है और ये न्यायकर्ता परेशान होकर उसकी आवश्यकता को पूरी करता है, तो प्रभु जो हमारे प्रार्थना के उत्तर देने के लिए उत्सुक है हमारे लिए और कितना करेगा. Hallelujah. हालेलुया. God does not like to see us suffer, but He's eager to wait. He's waiting for us to ask. We do not have because we do not ask. तो प्रभु हमें परेशानी में देखकर खुश नहीं होता, वो हमें देना चाहता है, पर वो चाहता है कि हम उसे मांगे. वो वेट करता है कि हम कब मांगेंगे. And the third most important point over here to notice, faith is the key. और यहाँ पे तीसरा मुद्दा जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्वास है वो चाबी. Okay, I'm going to go back to the parable of the persistent widow. And if you see this verse 8, okay, verse 8, the last line of the screen, if you're looking, it is written, but when the Son of Man returns, how many he will find on the earth who have faith? तो हम विधवा के कहानी में वापस जाएंगे और उसमें जो 8वां लाइन है वो कहता है कि जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा. कितने लोगों को ऐसा पाएगा जिनके पास विश्वास है? Okay. Hallelujah. हालेलुया. So the point is, if you have faith, then only you can go and ask again and again. तो मुद्दा ये है कि अगर आपके पास विश्वास है तभी आप जाकर बार-बार मांग पाओगे. If you do not have faith, you will give up. You will probably ask once, twice, and then you'll get tired and you will give up. अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप एक बार मांगोगे, 2 बार मांगोगे और फिर हार मान जाओगे. Okay, so constant and persistent prayers along with faith can move God. तो विश्वास के साथ लगातार प्रार्थना करने से ही हम प्रभु को खुश कर सकते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. But again, the question arises, and maybe we think a lot of times that, but why do I need to pray again and again? पर हम सोचते हैं कि बार-बार प्रार्थना क्यों करना पड़ेगा मुझे. And is God deaf that He can't hear my prayers, or is God's hand short that He cannot reach out and save me? क्या प्रभु के कान बहरे हैं कि उसे मेरी प्रार्थना सुनाई नहीं दे रही, या उसके हाथ इतने छोटे हैं कि वो मुझे बचा नहीं पा रहा. So let us look at this particular thing, that why is the Bible saying ask, pray constantly, pray without ceasing, come before the Lord, again and again ask. तो हम ये देखेंगे कि बाइबल ऐसा लगातार प्रार्थना करना, बार-बार आकर प्रार्थना करना ऐसे क्यों कहता है. Savina, you're muted. Hello? Yep. Yeah. Prayer is not a one-time affair. प्रार्थना जो है वो एक ही समय के लिए नहीं होता, एक समय करने के लिए नहीं होता. For example, okay, Crisilda is on the call. Yeah. Okay. So Crisilda is walking on the road. So उदाहरण के लिए क्रिसिल्डा जो है रास्ते पे चल रही है. And she sees this beautiful dress in a mall. और वो मॉल में एक बहुत ही सुंदर ड्रेस देखती है. And she says, I wish God I can get this dress.
और वो कहती है काश प्रभु मुझे ये ड्रेस मिलता. And after that, she forgets about it and she never prays about it again. फिर वो भूल जाती है उसके बारे में और वापस कभी प्रार्थना नहीं करती उसके लिए. And she never gets that dress properly. और फिर उसे वो ड्रेस भी नहीं मिलता. So this cannot be called as a prayer. This was just a wish that you made. तो ये जो था ये प्रार्थना नहीं था, वो सिर्फ उसके मन की इच्छा थी. It was just for the time being and something that you just ask once and you never bothered to ask again. It's probably not the deepest desire of your heart. It cannot be called a prayer. तो वो सिर्फ उसी समय के लिए उसे महसूस हुआ और शायद उसको हमेशा के लिए नहीं चाहिए था, इसलिए उसने उसके लिए प्रार्थना नहीं की. वो सिर्फ उस इच्छा आई एक समय के लिए. Okay? Something that I desire for, something is the deepest desire of my heart. Oh Lord, I want that. I will pray again and again for it. तो मेरी दिल की सबसे निजी इच्छा के लिए मैं बार बार प्रार्थना करूंगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Prayer is a spiritual warfare. और प्रार्थना जो है वो एक आत्मिक युद्ध है. एक आध्यात्मिक युद्ध है. आध्यात्मिक युद्ध है. Okay, so it's something that we cannot see what's happening in the spiritual realm. वो ऐसी चीजें जो हम देख नहीं सकते कि आध्यात्मिक में क्या हो रहा है. But it's literally like imagining yourself when you go to pray, you are like, you can imagine yourself like a soldier. पर ये ऐसा है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो आप खुद को एक सेना के जैसे देखो. Okay, for example, you see that picture on the screen. That soldier is having the sword. Okay, the sword is the word of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness. You go with full faith. It is like a battleground that you're entering. तो प्रार्थना करना जैसे कि एक युद्ध में शामिल होना जैसे है. Okay, so you have to go fully prepared, and it just doesn't happen once. और युद्ध में आप एक ही बार नहीं जा सकते, आपको पूरी तरीके से तैयारी करके जाना है. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm going to give you a quick example to help you understand. मैं आपको एक उदाहरण दूंगी समझने के लिए. Okay, for example, there's a war between India and Pakistan. समझ लीजिए इंडिया और पाकिस्तान में एक युद्ध है. Okay, and the soldiers, they decide that when we go in the war, we will only shoot once through the guns that we have. तो मान लीजिए कि जो भारतीय सेना है वो ये निर्णय लेते हैं कि हम जाएंगे जब युद्ध के जंग लड़ने के लिए तो हम अपने गन से सिर्फ एक ही बार गोली चलाएंगे. Okay, once we will shoot and we will leave. हम एक ही बार गोली चलाएंगे और फिर निकल जाएंगे. What do you think will happen? आपको क्या I'll give you लगता है? 3 options like Leon. Okay. एक, Second, वो they will जंग lose the जीत war. जाएंगे, वो हार जाएंगे. Third, they will be at peace. और तीसरा Show me है win, lose or have peace. क्या वो जीत जाएंगे, हार जाएंगे या फिर उनमें वापस What will शांति happen? होगी. I'm asking you all, can you show me through the screen? Win, lose or have peace? Okay, so I can see 2. Okay, they lose. तो वो Praise the जंग Lord. हार जाएंगे. Praise the Lord. Why? Because once you shoot and you put your guns down, the enemy will come and take over. तो आप एक बार गोली चलाओगे और अपनी बंदूक नीचे कर दोगे तो दुश्मन आपको आकर हरा देगा. Okay, in the same time, when you pray, if you just pray for it once, nothing might actually happen. तो उसी तरह अगर आप प्रार्थना कर रहे हो, आप एक ही बार प्रार्थना करोगे तो शायद कुछ नहीं होगा. The enemy will come and take over and your prayers will you'll never receive the answer to your prayers. तो दुश्मन आकर हरा देगा और आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा. You have to keep on shooting, you have to keep on praying, you have to keep on confessing the word of God. आपको गोली चलाते रहनी है, आपको प्रार्थना करते रहनी है और आपको प्रभु का शब्द बोलते रहना है. Hallelujah. हालेलुया. The second scenario, okay, now this time again there's a war between India and Pakistan. तो Let's फिर एक assume- बार भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ गई है. Okay, now the war is happening at Karachi border. और इस बार जंग कराची के
बॉर्डर पर हो रहा है. And what the Indian army is doing, they are shooting at China border, they're shooting at Nepal border, they're shooting at Sri Lanka border तो and Karachi border. भारतीय सेना चाइना के बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर और श्रीलंका के बॉर्डर पे गोली चलाने लगे. What do you think will happen? आपको क्या लगता है क्या One, होगा? they will win. Two, या वो जीत they will जाएंगे, lose. वो हार जाएंगे. Third, they will get tired, exhausted, and probably harm और themselves. तीसरा What will happen? ये कि वो थक जाएंगे. 1, 2, or 3. Win, lose, or get tired, exhausted, and probably give up. क्या वो जीतेंगे, हारेंगे या फिर वो थक कर हार मान जाएंगे? अच्छा, चलो, Samantha is saying third. Okay, I'll go with her answer. Okay, they'll get tired and exhausted. वो थक जाएंगे और हार मान जाएंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. In the same way, when we start making general prayers, we pray for the world, we pray for China, we pray for USA, and we probably forget to pray for our own selves. जब हम सब दुनिया में सब कुछ के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन हम खुद के लिए प्रार्थना करना भूल जाते हैं, You will get exhausted. हम थक जाएंगे. Okay, what I want to say is that your prayer should be specific and targeted. तो आपका प्रेयर जो है वो काफी मुद्दे पे It होना has to चाहिए. be मुद्दे पे होना चाहिए. मुद्दे पे होना चाहिए. Okay, example. Now you pray for coronavirus in the world to reduce. उदाहरण के तौर पर अगर आप कोरोना वायरस के ठीक होने के लिए प्रे कर रहे हो, Okay, और उसके कम and you होने say के God लिए, is not answering my prayers. और आप कह रहे हो कि प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा. Why? Because the cases are just going up, क्योंकि केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं. right? But someone from China will say, "अरे, God is answering your prayer. China में तो cases बंद हो गए." पर Right? कोई और कहेगा कि प्रभु आपके प्रार्थना को सुन रहा है क्योंकि चाइना में केसेस बंद हो गए हैं. So here what's happening, you are praying for the world and probably you will never understand if God is answering your prayer or no, because your prayer is not specific. तो यहाँ पे आप पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके प्रार्थना का उत्तर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका प्रेयर एक मुद्दे पर नहीं था. And you will never probably be able to give glory to God. और आप प्रभु को इस बात के लिए महिमा नहीं दे पाओगे. Like for example, prayer request keeps on coming, pray for me and my family. तो लोग प्रार्थना के लिए मांगते रहते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए. But what should I pray? Should I pray for health? Should I pray for business? Should I pray for studies? What for your family and yours should I pray? पर किस बात के लिए प्रार्थना मांग रहे हो आप? काम के लिए, पढ़ाई के लिए, पैसों के लिए, किस बात के लिए? Hallelujah. Your हालेलुया. prayers have to be specific. आपकी प्रार्थना एक मुद्दे पर होना चाहिए. Simple example, okay? You're praying for your business. अगर आप अपने व्यापार के लिए प्रार्थना कर रहे हो, You pray, God, please bless my business. आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मेरे व्यापार को आप आशीर्वाद दीजिए. And probably your business is just running, okay? And you will never be able to give glory to God that God is blessing or no, because you don't know what is the measure. तो आप अपने व्यापार में अच्छा हो रहा है कि नहीं, आप ये नाप नहीं पा रहे हो, इसलिए आप प्रभु को महिमा नहीं दे पाओगे. But if you say, God, today I have one shop, I pray, Lord, that I may have a second shop. And the moment that prayer is answered, you can know that God has answered that prayer. पर अगर आपने प्रार्थना में कहा है कि प्रभु आज मेरे पास एक दुकान है, कल मेरे पास 2 होगा, तो आपको पता चलेगा कि प्रार्थना का उत्तर आया और आप प्रभु को महिमा दे पाओगे. Hallelujah. हालेलुया. So the crux of the matter here is that prayer is a spiritual warfare. You cannot just pray one time and leave it. You have to pray constantly and you have to pray specific. तो प्रार्थना जो है वो कि आध्यात्मिक युद्ध है और आप एक ही बार नहीं कर सकते, आपको लगातार प्रार्थना करती रहनी चाहिए. And now let's come to one more very, very important point. What happens when you pray? तो जब हम प्रार्थना करते हैं क्या होता है? I don't know whether you know, but your prayer has the power to move the spiritual realm. पता नहीं आप ये बात जानते हो कि नहीं, पर आपके प्रार्थना में आध्यात्मिक
रूप में आध्यात्मिक। आत्मिक रूप में कार्य करने की बहुत ताकत है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Take your Bibles if you have, or you can just look to the screen from Daniel chapter 10, verses 11 to 14. Daniel की किताब अध्याय 10 पद संख्या 11 से 14 पढ़ेंगे. Okay, I'll give you a background about what is happening with Daniel over here. तो डैनियल Clear के there? साथ यहाँ पे क्या हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। Okay, so Daniel was praying for his people दानियल अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था and he was praying for 21 days. और वह 21 दिन के लिए प्रार्थना कर रहा था। He was praying and fasting for an answer for his people. वह प्रार्थना कर रहा था, अपने लोगों के लिए उत्तर मांग रहा था। Hallelujah. हालेलुया। And now let's see what happens in the book of Daniel chapter 10 verses 11 onwards. तो हम देखेंगे कि अभी इसमें क्या लिखा है। Okay, so just pay attention. And the man said to me, Daniel, you are very precious to God. So listen carefully to what I have to say to you. Stand up, for I have been sent to you. Who is this man that we're talking about over here? It's no one else but the angel of God that has appeared to Daniel. तो ये और कोई नहीं पर वो दूत है जो दानियल के सामने आया है। And this is Archangel Gabriel. और ये And he says that you are very precious to God and I'm here standing before you. और तुम प्रभु के लिए, वो डैनियल से कहता है कि तुम प्रभु के लिए बहुत ही खास हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आके खड़ा हूँ। Now see in verse 12 what happens. Then he said, फिर उसने who कहा, said angel, दूत ने कहा, don't be afraid, Daniel. दानियल तुम डरो Since मत। the first day तुम पहले दिन जब तुमने प्रार्थना शुरू किया, you began to pray for understanding and to humble yourself, तुम विनम्र होकर प्रार्थना करने लगे, your request has been heard in heaven. तुम्हारी विनती स्वर्ग में सुन ली गई है। Hallelujah. हालेलुया। Which day? पहले दिन, First day. First day. Daniel just decided, I'm going to fast and pray, and his prayer was answered in heaven. तो दानियल ने सिर्फ निर्णय लिया कि मैं प्रार्थना करूंगा और फास्टिंग करूंगा, और पहले ही दिन स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन ली गई थी। Hallelujah. हालेलुया। Interesting. More interesting, just let's look further what it says. It says, the angel says, I have come in answer to your prayer. मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर लेकर आया हूँ। Okay, so remember, when you pray, angel of the Lord comes तो जब भी आप प्रार्थना करते हो, याद रखना कि स्वर्ग दूत आते हैं with the answers to your prayers. आपके प्रार्थना का उत्तर लेकर। And look at verse 13 now. But for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. तो 21 दिन तक प्रिंस ऑफ पर्शिया के स्पिरिट ने मेरे प्रार्थना को रोकने की, आपके प्रार्थना के उत्तर को रोकने की कोशिश की। How many days? 1 day. Okay, understand this. Prayer was answered when? On the फर्स्ट डे। first day. When प्रार्थना did जो the है answer come पहले to दिन, Daniel? 21वां दिन। Yeah. Prayer was answered first day, but answer came on 21st day. तो उत्तर जो था वो पहले दिन को ही मिल गया था, लेकिन उत्तर पहुंचा दानियल तक 21वें दिन को। What happened 21 days? तो 21 दिन तक क्या हो रहा था? Flight miss हो गया. कोरोना वायरस आ गया था. Flight cancelled. The flight get cancelled because of COVID-19. So what happened? क्या हुआ? What happened is written in verse 13, where angel Gabriel is telling Daniel, this is the secret that we all should know.
तो ये है वो रहस्य जो हम सबको जानना है, that angel Gabriel is saying that the prince of Persia is nothing but the demon of that area of Persia blocked my way. तो गैब्रियल दूत उसे बताता है कि वो जो प्रिंस ऑफ पर्शिया था वो और कोई नहीं बल्कि एक शैतान था जो मेरे रास्ता में रुकावट लाने आया था। And imagine for 21 days, Archangel Gabriel is fighting this demon for your prayers, for Daniel's prayers. और ये जो एंजल गैब्रियल जो है वो 21 दिन तक लड़ाई करते रहा ताकि उसके प्रार्थना के उत्तर पहुंच सके। Imagine what would have happened if Daniel stopped praying the second or third day. अगर दानियल ने पहले या दूसरे दिन को ही प्रार्थना करना बंद किया होता तो क्या होता? Do you think the angel would have been able to get the answer? आपको लगता है कि वो दूत उत्तर लेकर आ पाता? I don't think so. It was Daniel's prayers and fasting that was supporting the angel to fight with that demon. वो दानियल की प्रार्थना थी, लगातार प्रार्थना थी जो दूत को शक्ति दे रही थी लड़ाई करने के लिए ताकि उसके उत्तर जल्द से जल्द आ सके। And further it is written, angel Gabriel is saying, then Michael, one of the archangel, came to help me and I left him there with that spirit prince of Persia and am now here to answer your prayers. तो स्वर्गदूत माइकल आया मुझे मदद करने के लिए और वो वहां पर लड़ाई करने लगा और मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर लेकर तुम्हारे पास आया। So imagine after 21 days also that the battle is still on. They have not stopped fighting. तो 21 दिन खत्म होने के बाद भी जो है युद्ध खत्म नहीं हुआ। उन्होंने लड़ाई करना बंद नहीं की। And Daniel prayed 3 times a day on his knees. और दानियल अपने घुटनों पर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। He was fasting also. वो उपवास भी कर रहा था। So how much more we need to pray for our prayers? तो हमें और कितना प्रार्थना करनी चाहिए? Because when we pray, our physical obedience releases spiritual blessings from heaven. क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, यहाँ हम धरती पर जो आज्ञा करते हैं वो आत्मिक रूप में कार्य करता है। Hallelujah. Hallelujah. Your prayer moves God. God answers his first day, and your prayer gives the support to the angel to fight, and then your prayers can be answered through your constant prayers. तो आपके लगातार प्रार्थना करने से आपके दूत को ताकत मिलती है लड़ाई करने के लिए और प्रभु जो आपके प्रार्थना को उत्तर देना चाहता है वो उत्तर आप तक पहुंच पाता है। Hallelujah. Hallelujah. And that is why the importance of praying constantly. और इसलिए लगातार प्रार्थना करना बहुत ही जरूरी है। Okay, so what we learn, pray constantly. Prayer is a spiritual warfare. तो हमने ये सुना है कि सीखा है आज कि हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना जो है वो है आत्मिक युद्ध है। There is a battle that is going on for you. Your angel is fighting for you. एक युद्ध चल रहा है आपके लिए और आपके लिए एक दूत युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। And only when you go with full battle, feel ready to fight that soldier, that your answers can come faster to you. और सिर्फ अगर आप तैयार है लड़ाई करने के लिए प्रार्थना के द्वारा तो आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको जल्द मिलेगा। Another important thing that we spoke about is praying specific prayers. और दूसरी चीज जो हमने बात की है वो है मुद्दे पे प्रार्थना करना। Okay, so now I'm going to close this by giving few certain testimonies of my own life. तो मैं आपको एक गवाही दूंगी मेरे खुद के जिंदगी के बारे में। Okay, so 6 to 7 years back, I had gone to Tabor Ashram for a retreat. 6 से 7 साल पहले मैं ताबोर आश्रम गई थी एक रिट्रीट के लिए। And there I learned this thing from the father who was preaching. और वहां पे मैंने इस फादर से सीखा। He told us that whatever is your prayer request, you write it down on a sheet of paper, be specific. और वहां पे उस प्रीस्ट ने हमें फादर ने बताया कि आपकी जो भी मन में इच्छाएं हैं आपके प्रार्थना के लिए है वो आप एक पेपर में लिख के रखिए। And whenever the mass is celebrated or whenever you're doing a personal prayers,
या फिर आप जब भी व्यक्तिगत प्रार्थना कर रहे हो या फिर जब भी मिसा के लिए जा रहे हो Father lifts up the host. और जब फादर जी उस होस्ट को पवित्र शरीर को उठाते Offer हैं, that paper that you have. You just lift it up in faith. उस वक्त आप उस पेपर को उठाइए अपने सामने विश्वास में. And trust me, I started doing that diligently. I started writing all my prayer requests in a paper, and I used to carry that in my purse. And during Mass, during my personal prayers, I just used to lift up that paper. तो मैं उसे लगातार जब भी मैं मिसा के लिए जाती थी उस पेपर को लिफ्ट अप करती थी और जब भी व्यक्तिगत प्रार्थना करती थी उस पेपर को ऊंचा उठाती थी और प्रार्थना करती थी. And what happened? और फिर क्या I हुआ? was praying earlier also, but now I was praying more specifically. और मैं पहले भी प्रार्थना करती थी पर अब जो है मैं ज्यादा मुद्दे पर प्रार्थना करने लगी. I literally had 4 to 5 papers that I had to start writing new because God was going on answering my prayers. I was going on doing tick mark, check, check. 4 से 5 पेपर में मैंने लिखा था और मुझे और पेपर लेना पड़ा क्योंकि वो इसमें जितने भी मैंने प्रार्थनाएं लिखी थी वो सब पूरे होते गए. Praise the Lord. Praise the Lord. My faith started increasing because I know God is answering my prayers. And I started praying more confidently, more constantly, and more specifically. मेरा विश्वास बढ़ता गया क्योंकि मुझे मालूम था कि प्रभु मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है और मैं और ज्यादा निडर होकर प्रार्थना करने लगी. Hallelujah. Hallelujah. Second testimony I'll share. So when I was looking for someone to get married before my marriage, Priya. तो मैं शादी के लिए जब लड़का देख रही थी शादी करने के लिए तो one sister from my earlier ministry had told me that you should specifically write down what are you looking for in a prayer partner for a life partner. तो मुझे उस सिस्टर ने कहा था कि आप मुद्दे पर प्रार्थना करो कि आपको अपने हस्बैंड में आपको पति में क्या-क्या चाहिए. People pray that Lord give me a good boy. What is the definition of good? तो लोग प्रार्थना करते हैं कि मुझे एक अच्छा लड़का दो, पर अच्छा क्या है? And I wrote, and my first thing that I wanted someone that who is more zealous for Lord than me. और मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो प्रभु के लिए मुझसे भी ज्यादा कार्य करता हो और जिसमें ज्यादा पैशन हो. I wrote that I wanted someone who does not have any bad habits. और मैंने ये भी लिखा कि मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसमें कोई बुरी आदतें ना हो. I also prayed and I wrote that I want someone from the same location because I did not want it to leave this location. और मैंने ये भी प्रार्थना की कि मुझे ऐसा लड़का दो जो इसी एरिया से हो और कोई दूसरे एरिया से नहीं क्योंकि मुझे यहाँ से नहीं निकलना था. Couple of things more I wrote that I wanted a musician. That did not happen. और मैंने ये भी लिखा था कि वो एक संगीतकार होना चाहिए पर वो नहीं मिला मुझे. But the major points happened. I got exactly the right person according to what I had written and I was praying for. पर मैंने जो भी लिखा था उस पेपर में मुझे उनमें से लगभग सारे पॉइंट्स मिले मेरे पति में. Was the answer to that prayer. और ब्रदर लियोन इनके प्रार्थना का उत्तर था. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, so again, constant prayer, specific prayers. Third testimony is about our house. वो इनके घर के बारे में है. So we were praying and we were looking for a house and we wanted a 2 BHK. तो हम प्रार्थना कर रहे थे, घर ढूंढ रहे थे और हमें एक 2 रूम 2 BHK चाहिए था. We did not have enough money. There was not sufficient funds. We didn't know how it will happen, but we were praying, and that was also one request that I had written in my paper. तो पैसे की कमी थी, हमें नहीं पता था सब कैसे होगा, लेकिन मैंने वो पेपर में लिख लिया था और हम प्रार्थना कर रहे थे. Trust me, we literally looked at so many houses, and at the end, we got the best of the houses, and the only builder who gave us 2 installments of down payment because of which we were able to buy this house. तो हमने बहुत सारे घर देखे और एक ही ऐसा एक बिल्डर मिला जिसने हमें 2 इंस्टॉलमेंट में डाउन पेमेंट करने का ऑप्शन दिया और इससे हम ये घर खरीद पाए. हालेलुया. प्रभु ने हमारे प्रार्थना का उत्तर दिया. And the last testimony I want to talk about, my father passed away 2 weeks back.
और ये आखिरी गवाही है, इन सवीना के पिता का देहांत हुआ 2 हफ्ते पहले। And Leon knows, I always pray. This is my prayer I make for my entire family. और ब्रदर लियोन को पता है कि सवीना एक प्रेयर करती है अपने पूरे परिवार के लिए, That none of a family member, okay, my parents or my children or us should ever come across any kind of prolonged sicknesses or should be bedridden or should come across any kind of tragedy or accident. तो सवीना हमेशा ये प्रार्थना करती है कि उसके परिवार में किसी के साथ भी किसी बहुत देर तक कोई बीमारी ना हो, किस एक्सीडेंट ना हो, Bedridden na ho. और बेडरिडन ना हो। And one prayer that I make at the end, that Lord, whenever you call us to death, it should be a peaceful death. और कि जब भी आप हमें मृत्यु के समय बुलाओ तो वो एक बहुत ही शांति से मृत्यु होनी चाहिए। My father passed away in his sleep. और इनके पिता की मृत्यु इनके नींद में हुई। And he did not even get bedridden. He was on the verge of probably getting, but he did not get. और ऐसा भी नहीं था कि वो बिस्तर पर बहुत देर दिन तक बीमार रहे। He was not at all sick, but he did not fall on bed also. वो बीमार नहीं थे इतने, और वो बिस्तर पर भी नहीं पड़े He रहे। passed away peacefully, in short. So, it was an assurance that, my heart said that God, you answered my prayer. और मेरे लिए वो एक आश्वासन था कि मेरे पिता की मृत्यु बहुत ही शांति से हुई। Praise the Lord. Praise the Lord. So God is good, and He really, really is waiting for us to come and ask and to receive our blessings from Him. तो प्रभु बहुत अच्छे हैं, वो देना चाहते हैं और वो वेट कर रहे हैं कि हम कब आकर उनसे मांगेंगे। All right. So let us take this time now to come in prayers before the Lord. तो इस समय हम आकर अभी हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। Okay, let's come in a reverent posture before the Lord. Wherever you are, just keep your books and everything aside, and let us just open our palms before the Lord. तो अपने and come हाथ in prayers. Close your खोलकर eyes. अपने हाथ खोलकर सभी चीजें साइड में रखकर अभी हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Lord. Praise be to Him. Shabbat Diribeti Atharam. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Brothers and sisters, let us believe God for our prayers that we are saying. Okay, God is good all the time, and He is eager to hear and answer our prayers. He's eager. प्रभु बहुत ही अच्छे हैं और बहुत उत्सुक है हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। All you have to do is ask. सिर्फ हमें मांगना है। And the word of God says that on the first day that you put your heart to seek God, He will answer your prayer. प्रभु का शब्द कहता है कि वो पहले दिन जब आप प्रभु के शब्द में अपना दिल रखो तो आपकी प्रार्थना का उत्तर प्रभु देगा। So maybe before this you have prayed many days. शायद इससे पहले हमने बहुत दिनों तक प्रार्थना की है। One of my heart's desire was that we have a house on our own name. मेरी दिल की एक इच्छा थी कि हमारा खुद का घर हो हमारे नाम। Because most of my childhood life we've been living in our relatives' homes. क्योंकि बचपन से मैं अपने रिलेटिव्स के घर पे रहा करता था। सगे संबंधियों के घर पे रहता हूँ। तो बचपन से from childhood his dream was that God bless us with the house, bless us with the house, and I was initially praying for a house on our parents' name. और मैं बचपन से मेरी प्रार्थना थी कि मुझे अपने नाम पर एक घर चाहिए और मैं पहले प्रे करता था कि no, somehow that did never happened when I was in school or college when we were praying God, can we have a house? पर कुछ बात से वो मेरे कॉलेज के टाइम पर नहीं हो पाया।
But God is so good that He blessed the house when I got married. He blessed us with a house, and the house is on my name and Savina's name. पर प्रभु ने हमारी ये इच्छा पूरी की। शादी के बाद अभी इनके पास खुद का घर है इनके नाम पे। So maybe for a house, we prayed for close to 10 years to 15 years of my life. तो लियोन ब्रदर ने घर के लिए 10 से 15 साल तक प्रार्थना किया है। So there are different prayers that get answered at different stages in life. तो कई सारे प्रार्थनाएं जिंदगी के अलग-अलग समय में प्रभु उत्तर भेजता है। But the point is, you should have that zeal, that stubbornness, that I want it, Lord. पर आपको आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, वो बहुत ही कि आप मांगते रहो और मुझे चाहिए और प्रभु मुझे दीजिए। The Bible talks about Jacob. प्रभु याकूब के बारे में बताता है, बाइबल याकूब के बारे में बताता है। Jacob ran from God and from his problems throughout his life. याकूब अपने जिंदगी में अपने परेशानियों से भागता रहा। As long as he was running, he was never at peace. और जब तक वो भागता रहा, वो कभी शांति से नहीं रह पाया। And then the Bible says one day he came face to face with the living God. और एक दिन वो प्रभु के आमने सामने आया। And he fought with God. और उसने प्रभु से लड़ाई की। He wrestled with God, the Bible says. उसने प्रभु के साथ दंगल किया। The whole night he was wrestling with God. वो पूरी रात लड़ाई करते रहा। And the morning when God was going back, और सुबह जब प्रभु वापस जा रहा था, he says, I will not leave you till you bless उसने me. कहा कि मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते। Is it possible to wrestle with God? क्या प्रभु से लड़ाई करना संभव है? Is it possible to say, God, I will not leave you till you bless me? क्या ये बोलना संभव है कि मैं आपको तब तक नहीं छोड़ूंगा प्रभु जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं देते? Can man tie God or keep God? क्या मनुष्य प्रभु को बांध सकता है या रख सकता है? नहीं। So though directly no, but the Bible says Jacob did it. शायद नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु का शब्द कहता है कि याकूब ने ऐसा किया। Jacob was blessed. और याकूब को आशीर्वाद मिला। And because Jacob was blessed, all his generations got blessed. और क्योंकि याकूब को वो आशीर्वाद मिला, उसके आगे आने वाली पूरी पीढ़ी को आशीर्वाद मिला। So today, in faith, hold on to God. तो आज विश्वास में हम प्रभु से मांगेंगे। And cling to Him. और प्रभु से जुड़े रहें। And tell God today, I will not leave you till you don't bless me and bless everyone who's praying right now. कि आज प्रभु मैं आपको छोड़ूंगा नहीं जब तक मुझे आशीर्वाद नहीं मिलता। मैं छोड़ूंगा नहीं आज जब तक I don't get my blessing. See, who can do this? Yeah. It sounds very the audacity of thinking that you can say this to God. ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है प्रभु से कहने के लिए। Tell me this: if you have a 2-year-old kid or 3-year-old kid in your house, अगर आपके घर में 2 से 3 साल का बच्चा है, now I've got a 3-year-old daughter. Her name is Lisa. इनके घर में 3 साल की बच्ची है, इसका नाम है लीसा। And when I'm working on my laptop, she'll come and says, "Dada, you have to play with me." और जब मैं अपने लैपटॉप में काम कर रहा होता हूँ, आके कहते हैं कि आपको मेरे साथ खेलना पड़ेगा। Once I was on a video call with my office, and she came on the video call. Dada, you have to play. एक बार मैं ऑफिस में वीडियो कॉल मेरा ऑन था और वो आके कहते कि पापा खेलना पड़ेगा। And I said, "Give me 5 minutes." और मैंने कहा मुझे 5 मिनट दो। No, you have to play with me now. और वो कहते हैं नहीं, अभी खेलना पड़ेगा। Until I did not get up, she kept saying, "Now, now, now, now." और जब तक मैं उठा नहीं, तब तक वो कहते रही कि अभी, अभी, अभी। That was the childlike faith or stubbornness, what you want to call it. वो है जो बच्चों में जो जिद होती है या फिर विश्वास, आप जो भी कहना चाहो।
that if I ask my father, I will get it. कि He मैं will do अपने it for me. कि मैं अपने पिता से मांगूंगी और मुझे मिलेगा और मेरे पिता मेरे लिए करेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Only when you realize and accept that you are a child of God will you have the audacity to say, God, I will not leave you till you bless me. अगर आप अपने मानते हो कि आप प्रभु के बच्चे हो और आप विश्वास से उन्हें मांगोगे, तभी आपको मिलेगा. So first accept that you are a child of God. तो पहले ये मान लीजिए कि आप प्रभु के पुत्र या पुत्री हो. And when you accept that you are a child of God, then you understand that you have a right to ask your father for your needs. तो जब आप ये स्वीकार लेते हो कि आप प्रभु के बच्चे हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप हक से मांग सकते हो अपने पिता से अपनी सारी जरूरतें. And then you will not be afraid. What will God do if I'm asking? You will be assured that what I'm asking, I will get. फिर आप डरोगे नहीं मांगने के लिए, पर आप यकीन से मांगोगे कि मैंने जो मांगा है वो मुझे मिलेगा. Little children ask their parents even for the sun and the moon. छोटे बच्चे तो सूरज और चांद भी मांग लेते हैं अपने पेरेंट्स से. They don't sit to calculate, can my father afford it? Will he be able to give me? वो ये सब नहीं सोचते कि मेरे पापा ला पाएंगे क्या मेरे लिए, वो बस मांगते हैं. At 3 o'clock in the night, Lisa wants ice cream. रात के 3 बजे लीसा को आइसक्रीम चाहिए होता है. She does not tell me, Dada, it's night time. Will you be able to get me ice cream? वो ये नहीं पूछती कि 3 बजे है रात के, आप ला पाओगे क्या. That's your problem. Dad, I need the ice cream. वो आपका प्रॉब्लम है, आप मुझे बस ला कर दीजिए. And with that childlike faith, she keeps pushing me. और उस बालक के विश्वास के जैसे वो मांगते रहती है. And if I can't get her ice cream, I have to get her something else and calm her down. और मैं आइसक्रीम नहीं ला पाता, लेकिन मैं कुछ और ला कर देता हूँ उसको शांत करने के लिए. Same way, keep the faith in God. उसी Don't limit तरीके your asking. उसी तरीके से विश्वास अपना बनाए रखें और अपने मांगों को छोटा ना कीजिए. Okay, the bigger you're asking, you're complimenting God. जितना बड़ा आप मांगते हो, आप प्रभु को एक प्रशंसित कर रहे हो, प्रभु को की प्रशंसा कर रहे हो. Because you're trying to tell God, I trust you that you can do it for me. क्योंकि आप प्रभु से ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे विश्वास है आप मेरे लिए कर सकते हो. So today, right now, close your eyes. अपनी आंखों को बंद करेंगे. And what do you want God to do for you? प्रभु से क्या चाहते हैं आप. Don't try to be modest. छोटी छोटी चीजें मत मांगिए. Some people are try to, oh, I will be humble. I will ask God something small. हम में से कुछ लोग सोचते हैं हम विनम्र होकर कुछ छोटा मांगेंगे प्रभु से. You don't serve a small God. He's pretty big. The biggest, even if you ask him the sun and moon, it's nothing for him. अगर हमने अपने प्रभु से सूरज या चांद भी मांग लिया तो वो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं है. God for something too big. हम प्रभु से कभी भी कुछ बहुत ज्यादा बड़ा मांग ही नहीं सकते. He's the same God who parted the sea. वो वही प्रभु है जिसने सागर को भाग दिया था. He's the same God who raised the dead to life. जिसने मुर्दों को जिंदा किया था. He's the same God who fed his people in the desert. जिसने रेगिस्तान में लोगों को खाना दिया था. Who gave them water out of a rock. जिसने पत्थर से पानी निकाला था. So is there anything difficult for him? क्या प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल है? That is why now make specific prayers. इसलिए मुद्दे पर प्रार्थना कीजिए. What do you want God to do for you? आप क्या चाहते हो प्रभु से? God, I need a job. प्रभु मुझे एक जॉब की जरूरत है. So if I want a job, tell him which industry you want. Tell him what company, what type of company you want. तो प्रभु से ये पूछिए कि किस तरीके का जॉब चाहिए, किस इंडस्ट्री में चाहिए और कौन से कंपनी में चाहिए. प्रभु को पूछिए नहीं, प्रभु को बताइए. सॉरी, प्रभु को बताइए. If you want to your family to be blessed, then don't say, God, please bless my family. Say what blessing you want in your family. तो प्रभु से मुद्दे पर मांगे कि आपको अपने परिवार के लिए कौन सा आशीर्वाद चाहिए.
You want your father to spend more time with the family. You want your mother to become a little more peaceful. I'm just giving examples. Or you want your younger brother or elder sister to learn to keep quiet a little bit. अगर आप चाहते हो कि आपका पिता आपके साथ ज्यादा समय बिताए या मम्मी ज्यादा शांति से रहे या आपके भाई बहन मुंह बंद रखे, मैं सिर्फ उदाहरण What दे is it रहा that you हूँ. want? Be specific. क्या Be चाहते हो आप, specific. मुद्दे पर मांगे. Yes. And when you see that specific answer, then you will know for sure that God is answering your prayers. और जब आप वो प्रार्थना का उत्तर आते हुए देखोगे, तब आप समझोगे. So right now, close your eyes and start asking. Shandyala bara bara nyara. Satyara riyara basakatere besandala dekhetere. Almighty ever living God, who said that whatever two or more of you shall agree as touching here on earth, it shall be done. Father, we come into agreement in the name of Jesus Christ for all the dreams and all the needs of your children, O Lord God. We have buried a lot of our dreams, O Lord God, Father, a lot of our desires, O Lord God, under the various doubts that we had. We have buried them, O Lord God, Father, under the various depressions that we've had, O Lord God, Father, because we've given up, O Lord God. Today we resurrect them, Lord, and we hand them to you. Lord, we need these things, Lord. We need health, specific health, oh Lord God, in the family. We need finances to be released, oh Lord God. We need jobs to be released, oh Lord God. We need peace in the family, oh Lord God. We need, oh Lord God, Father, for our loved ones to come home safely, oh Lord God. We need, oh Lord God, for the ministry to grow, oh Lord God, Father. We need, oh Lord God, so many things. Each and everything we are placing in your hand. We need our homes, Lord. Some of us here are praying for homes for years. May they have their home, oh Lord God, this year we pray, oh Lord God. Father, though the world is going through a pandemic and the world is going through a downward curve, your people will see a growth in the name of Jesus, oh Lord. Because we are not dependent on the situation, we are dependent on the God who's the Lord of all situation. Father, our faith is not based on what is happening in the world. Our faith is based on the God who speaks everything into existence. Lord, we pray right now, speak into our life, oh Lord God. We cancel all the negative words we have spoken, oh Lord God. We cancel all the doubts, oh Lord God. We cancel everything that people in authority have spoken over us in any negative way, oh Lord God, Father. We break, oh Lord God, every barriers that we have put for our life, oh Lord God. Lord God, we are blessed, oh Lord God. Children of Abraham, oh Lord God. Blessing you have blessed us, oh Lord God. And prospering you have prospered us, oh Lord God, Father. Goodness and mercy will follow us all the days of our life, oh Lord God. Even though 1,000 may fall at our right hand, 10,000 all around us, no evil shall befall us, Lord. No plague shall come near our dwelling, oh Lord God, Father. Father, you have put your angels in charge over us, oh Lord God. And they watch over us, oh Lord God. They lift us up in their hands, oh Lord, that we do not hurt our feet on a stone. Father God, in the name of Jesus, we agree that every prayer that people on the call right now are making is heard and answered, oh Lord God. Father, we bind every demonic power that is trying to block our prayers in the name and blood of Jesus Christ, oh Lord God. We release the blood of Jesus against any demon power that is trying to block our prayers, oh Lord God. That's trying to stop the answers of our prayers, oh Lord God, Father. And Lord Father, in faith, we release your angels on angels, oh Lord God, for warfare, that they may fight so that our blessings and our answer of our prayers may be received by us, oh Lord God, Father. Father, in Jesus' name, we give you praise in advance for every answered prayer, for every healing, oh Lord God, for every financial and job-wise breakthrough, oh Lord God, for every family situation that has worked out, oh Lord God, Father, for all your blessings over our life, oh Lord God.
Bearala diara tikere me sandala. Thank you, Jesus. Praise you, Shandala. Liara bakara mande kete ala basato loro yara yara dikene. For Lord God Father, let every genetic sickness that has come from fathers and forefathers, oh Lord God, diabetes, blood pressure, oh Lord God Father, and any other illness, oh Lord God Father, that is running in the family tree, oh Lord God, be broken and healed right now in the name and blood of Jesus Christ of Nazareth, oh Lord God. Father God, we pray for people who are suffering loneliness right now, Lord, that your angels may go and dwell with them, oh Lord God. They may never feel lonely, oh Lord God. Your Holy Spirit may be with them right now, Lord. We pray for that person who's suffering, oh Lord God, Father, oh Lord God, who's suffering because of debts and because of financial problems, oh Lord God, who has been threatened by creditors, oh Lord God, Father. That, Lord, your hand will bless, oh Lord God, Father, that a provision will come, oh Lord God, Father. We pray for secure jobs, oh Lord God, Father. We pray for promotions and better jobs, oh Lord God. In Jesus' name, no weapon formed against us shall prosper, Lord. And every tongue that rises against us in judgment, we now condemn it in the name and blood of Jesus Christ of Nazareth. For your word declares our righteousness, O Lord, is from you, O Lord God. Is our righteousness as a gift from you, O Lord God, through our Lord Jesus Christ. Let the Lord work in your life right now, brothers and sisters. His presence is here. His anointing is here. प्रभु का सामर्थ्य यहाँ पे है और वो आशीष दे रहा है. अपने हृदय को खोल लीजिए और जो मन में आपने इतने साल से इतनी इच्छाएं मार दिए हैं, दबा दिए हैं, उनको प्रभु के हाथ में दीजिए. प्रभु ने वो इच्छाएं आपके दिल में डाले थे. All that what you wanted to achieve in life was put by God. Don't compromise. Give it in God's hands. Start new. Start your life again. Today is the first day of the new day of your life. It doesn't matter what your age is. It doesn't matter what your situation is. God is with you. And the Bible says, if God be for us, who can be against us? अगर प्रभु मेरे साथ है, तो मेरे खिलाफ कौन खड़ा रह सकता? Don't worry, brothers and sisters. Whatever is your past cannot dictate your future. तो आपका जो पिछले जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जो अभी तक हो चुका है, वो आपके आने वाले दिनों के बारे में आपको नहीं बता सकता. आपके आने वाले दिन प्रभु के हाथ में हैं और प्रभु आपको आशीष देना चाहता है. कि प्रभु ने यिर्मयाह में कहा है, God said to Jeremiah, behold, I know the thoughts I have for you, thoughts for your good and not for evil, thoughts to prosper you. तुम्हारे अच्छाई के लिए मैंने विचार किए हैं, तुम्हें आशा देने के लिए मैंने विचार दिए हैं, तुम्हारी बुराई के लिए नहीं. इस वक्त उस प्रभु के ऊपर विश्वास रखे. प्रभु हमारे साथ है और उस प्रभु पे विश्वास करते हुए अभी प्रार्थना करें. Don't pray in your heart, brothers and sisters. Pray with your mouth. Make a declaration of faith. God, I trust you. I know you are with me. I know you're blessing me. I know my career will be good. I know my family will be good. I know my finances will be good. I know my health is going to be good because you are with me. You alone are the one who is providing. You alone are the one who's giving. And you alone are enough. In Jesus' name, we have all that we have because his name is enough. And right now, we'll raise our hands and say, Lord Jesus, come bless us. Lord Jesus, come deliver us. Lord Jesus, provide for us. Lord Jesus, confuse the plans of the enemies. Lord Jesus, bless your children who are praying now. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Jesus. Praise you, Jesus.
Praise you, Jesus. Thank you. If anyone, the team members have prophecy, please give prophecy. Thank you, Jesus. Praise you. Brother Rupal has prophecy. Hello? 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 Give your prophecy. Yeah, so somebody is praying for rent and God is providing with the rent. God is saying that He will provide. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Brothers and sisters, प्रभु कह रहा है कोई अपने घर की जो रेंट है उसके लिए प्रार्थना करो और वो प्रोवाइड कर रहा है. प्रेज द लॉर्ड. बट मैं उस भाई या उस बहन को एनकरेज करूंगा कि इसको तो स्वीकारे लेकिन प्रार्थना करे कि प्रभु आपको रेंट के घर से निकाले और आपको खुद का घर दे. Pray for that. Pray that you get your own house. Pray that you have a house of your own name where you don't have to pay rent. Have that faith and say, God, I want it. I want it. I want you to bless me with a house. Any more prophets? Please go ahead and give. Vanka. Hello. Yes, I can see a year, and I can. The interpretation is that God is listening to all our prayers. He's just waiting for us to ask. प्रभु हम सबकी प्रार्थना सुन रहा है और बस रुका हुआ है कि हम कब मांगेंगे. तो मांगो कि मांगो, जो मांगेगा वो पाएगा, जो ढूंढेगा उसको मिलेगा, जो खटखटाएगा उसके लिए दरवाजा खोल दिया जाए. मांगो. Jonathan has a prophecy. There's a female who is emotionally disturbed. God is listening to her. Surrender to God. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. धन्यवाद है परमेश्वर पिता कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं, कि आप हमारे साथ हैं, आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते. धन्यवाद हर इस भाई बहन के लिए जो हमारे साथ हर सैटरडे को यहाँ पे प्रार्थना के लिए जुड़ते हैं. प्रभु उनके जीवन पे आपका आशीष आने दे. प्रभु Father God in heaven, I thank you and praise you that you always hear our prayers. We especially thank you for all our brothers and sisters who join us every Saturday, and we pray for a special blessing upon their lives, O Lord God. Father, I pray in your holy name, in the name of Jesus Christ, may the Lord bless you and keep you. May he make his face shine upon you and give you peace. May he make you the head and not the tail. May the enemy who comes against you in one direction flee from you in 7 directions. May the Lord bless your bowl and your basket. May the Lord bless your food and your water. May the Lord bless you that you may have to lend to many, but will have to borrow from none. May the Lord bless you so much that people around you may have to declare, look at what the Lord has done for them. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen and amen and amen. Let us raise our hands towards heaven as we pray the prayer that God has taught us. Our Father, you are in heaven. Holy be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. And lead us not to temptation, but deliver us from all that is evil. Amen. Join our hands. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. All glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without an end. Amen. Brothers and sisters, thank you once again for joining us every Saturday.
please do keep joining us. And if you really are benefited, please do share the code and the details of the talk of the meeting with others who can also benefit from it. And keep us impressed, keep Savina, me, and the entire team. We all of us go through a lot personally and otherwise also, so that we can put these talks, these sharings online to you all. You can notice the technical issues that we are trying to do with our limitations. So pray for us. Pray that by God's grace, we can do the best we can for you all. So keep us in prayers. God bless you all, and see you all next Saturday. Praise the Lord. Jaden, you can end the meeting. Thank you so much.